The man in question, Brij Bhushan Sharan, hasn't even been called in for investigation. I want to cut across right now to Vikram Singh, former DGP, Charu Wallikhana, advocate, Supreme Court. She's also a former NCW member, and we'll also be joined in a short while from now, former athlete and Olympian Krishna Punia, who was with the BJP. Since then has left the party and has been squatting with these wrestlers at Jantar Mantar over the last 30 days for justice. Vikram Singh, you know, one very basic question. When there is an accused under a POCSO Act, leave alone an arrest, he hasn't even been included in the ambit of investigations yet. The FIR filed was 15 days ago. How can this man turn around and ask the wrestlers to go through a narco test? This is getting to be bizarre by the minute, Preeti. It is not a matter of choice or a discretion that the accused or the complainant can say that they want a narco analysis. It is for the investigating team to identify the reasons, because there are multiple case laws and regarding section 161 of the CRPC that everybody has to come out with the truth as far as investigation is concerned. Article 20, sub-clause 3 of the Constitution, that yes, nobody can be forced to take up the narco analysis, and also the case laws without going into the details. The investigators has not covered themselves with glory, because the FIR was lost after considerable delay and after the intervention of the Honorable Supreme Court. And this is happening with those, the complainants happen to be the medal winners in Olympics for the country, not lesser mortals like me. Now, if the investigation had been prompt, which it has not been, and there is a provision in the IPC 166A of the IPC that if the IO is found negligent in such matters, they should be taken to task and the case against them should be registered, and there is a provision of imprisonment for 6 months against them also. I don't think anything on the lines of pure and simple legal investigation is happening. It is one against the allegation and counter allegations, Preeti. Right. I wish the investigators do justice to investigation and come out with the facts. You know, as I go to our other guests, I want to ask you one very basic question, sir. You know, you've been a DGP for years. If there is a POCSO case against someone and there is an underage girl involved when it comes down to sexual harassment, usually one would think that an arrest would be made immediately. Very good question. I would say that in such matters, if the complainant says that this is what has happened, there is no other evidence that is required. Her testimony and her statement before a magistrate are reason enough to make that arrest without waste of time. And they say shoot first, apologize later. Let the accused go and prove himself innocent before a court of law. It is not for the investigator to become a high court judge himself. You know, that's the bizarre part, sir, and I'm going to bring in our other guests as well, because earlier on, their statement, the 7 girls who've been sexually abused, was not even recorded before a magistrate. It wasn't recorded under section 164 of the IPC, but 161. Finally, after pressure, that is when the Delhi police recorded their statement in front of a magistrate. Joining me right now is also Krishna Punia, former athlete and Olympian. पुनिया जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी। हर दिन आप जा रही हैं इन लड़कियों के साथ बैठने। आप खुद बीजेपी के लीडर रही हुई हैं, अभी नहीं हैं, पर ये आपको समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है, कृष्णा जी? प्रीति जी, पहले तो मैं करेक्ट कर लूं कि मैं बीजेपी से नहीं, मैं कांग्रेस से एमएलए हूं। जी, और मैं दूसरा, मैं प्रीति जी ये कहना चाहूंगी कि सर्वप्रथम मैं महिला हूं और हमारे देश की बच्चियों के साथ हो रहा है। मैं एथलीट रही और सब बातों से परे होकर मैं इस धरने प्रदर्शन पे इसलिए भी पहुंची कि आज हमारी जो बच्चियां हैं वो धरना प्रदर्शन पर हैं। और किस लिए हैं, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश के संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि कोई बेटी अपनी आबरू को दांव पे लगा के इस तरीके से पूरे देश के सामने अपने आप को वो भेजेगी। तो ये जो हो रहा है वो बहुत ही दयनीय, मैं कहना चाहूंगी, पीड़ा है, संवेदनाएं मर गई हैं लोगों की। आज जिन खिलाड़ियों ने ये आवाज उठाई है उन्हीं से सवाल किया जा रहा है कि जैसे वो खुद ही दोषी हों। आज तक अपराधी है, वो पोक्सो एक्ट उस पे लगा है, गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके मुताबिक मीडिया ट्रायल चल रही है, मेरा नार्को टेस्ट हो जाए, उनका नार्को टेस्ट हो जाए, पद पे वो बना हुआ है। 15 रुपए की कीमत वो एक मेडल की लगाता है। जब एक एथलीट को 15 साल दिन रात मेहनत करके जो मेडल मिलता है तो उसकी 15 रुपए कीमत आंकता है, तो वो व्यक्ति कैसे खेलों का भला कर सकता है? दूसरा प्रीति, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भगवान ने एक ऐसा गिफ्ट दिया। बैड टच गुड टच तो आदमी भी समझ सकता है, लेकिन महिला एक आंख के
जो नजर से, जो अगर किसी मर्द की नजर भी गलत होगी तो वो पहचान सकती है कि ये व्यक्ति मेरे को किस नजर से देख रहा है। तो उन लड़कियों ने जो बात देश के सामने उठाई है, तो इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बृजभूषण शरण को तुरंत रूप से गिरफ्तार हो जाना चाहिए। उनको ये सारे मैं कहूंगी कि वो जो पद है आज तक जो बने हुए हैं, बेशक से एडॉक कमेटी बन गई है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतने घमंड में चूर हैं, और जिनके ऊपर इतने आपराधिक मामले हों, और बार बार वो अपने आप को सफाई पेश कर रहा हो, एक तरीके से एक राजाशाही दिखा रहा हो कि मैं जैसा कहूं वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, खिलाड़ियों से बार बार सवाल किया जा रहा है जैसे वो अपराधी हों। तो इससे ज्यादा विडंबना हमारे देश के लिए और क्या हो सकती है।